Okay. Now we'll do the different types of process in thermodynamics. Thermodynamics mein, what are the different types of process are there? So keep reading thermodynamic process. So different types of thermodynamic process are there. What is it is a change of state from one equilibrium state to other equilibrium state is called as thermodynamic process. So the gas took the one process to other process means one state equilibrium state से other equilibrium state जा रहा है. Okay. And different types of process कौन सा है? Isobaric process मतलब pressure is constant. Next isochoric, volume is constant. Isothermal, temperature is constant. Adiabatic process, heat is constant, heat is zero. And polytropic process is we have to write the PV power n is equal constant. This is the equation which we use in polytropic process. Mein. PV power n is equal constant. Copy down. Now we have to study detailedly each and every process. Here, n is called polytropic index. Polytropic index. अच्छा डन. Okay. Now first we'll go for the एक process में जाएंगे. One is for an isobaric process. लिखो first लिखो. Isobaric में which one is constant? I told you baric means pressure, right? So pressure is constant. In ideal gas equation PV is equal to nRT में if pressure is constant, nr is constant, that means volume is proportional to temperature. Which law it is? Which law? Charles law. Charles law. Okay, so it obeys Charles law. Okay. Now here from this numericals में क्या आएगा? V by T is equal constant. That means V1 by T1 is equal to V2 by T2. So you have to understand which law we have to use in isobaric process. And if I draw the pressure and volume, isobaric में pressure is constant. And in isobaric में volume and temperature का ग्राफ कैसा रहेगा? Straight line passing towards. Straight line रहेगा. Volume and temperature. मतलब whenever the given volume and temperature का straight line, that means okay direct relation कब आएगा? Pressure is constant बोल के आपको idea आने का. Yeah, sir. Now in this में isobaric process में CP will be, what is the formula? Isobaric process में CP will be CV in plus depths R. of degree of freedom में F by 2 plus 1 times of R. Yeah. Or in terms of R and gamma में gamma R by Gamma minus 1. gamma minus 1. Okay. In constant pressure में what is change in heat? Molar heat का heat का क्या होगा? NCP delta T. NCP delta T. Molar specific heat capacity at constant pressure. And delta U कितना होगा in isobaric process में? NCV delta T. Now use the first law of thermodynamics. What is our first law of thermodynamics? Is
Delta Q is Oh yeah, equal you to get delta CP U. minus CP equals to R. So from this work done find करो. You'll get N delta T into CP minus CB. So n delta T अगर मैं कॉमन लूंगा ठीक है. इसमें सब करो n delta T into CP minus CB, right? What is Yeah. CP minus CB is nothing but R. so work done is nr delta T. This is the formula for work done for isobaric process, nr delta T. Okay. If I can write delta T is nothing but T2 minus T1 only. इसको और भी expand करूंगा. nr into T2 minus T1. So nRT minus nRT मतलब P2 V2 PV2 is minus. So I'm multiplying nr into T2, nr into T1. What is nRT is nothing but P into V2 minus V1. क्या गया ना? nRT is nothing but ideal gas equation. So PV. So V2 minus V1. So P delta V. Very important. आपको दो formulas are there. Isobaric में दो formulas are there. What is the formula you use in terms of temperature में nr delta T और P delta V. पहले पढ़ा ना P dV, P delta V वर्क डन का. Here only. Isobaric process में P delta V at use. Because constant pressure है ना. अगर प्रेशर कांस्टेंट नहीं है तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या यूज करेगा? इंटीग्रेशन V1 V2 PdV यूज करने का, V1 V2 बोल के. ओके, सो ये फॉर्मूला बैठ करने का आइसोबारिक प्रोसेस. अंडरस्टूड? ओके, नाउ इसका बेस में न्यूमेरिकल्स करने वाला है. सो व्हाट इज द फॉर्मूला? nr डेल्टा टी और p डेल्टा v. चलो करो. One mole of ideal gas expands isobarically at a pressure this much from volume 2 liters to 5 liters. Find the work done by the gas. So 600. देखिए So you'll get 6 into 10 power 5 pascals. That's 600 kilopascals. 600 joules आएगा. Yeah, Okay. joules. So we are to use this one P into V2 Oh minus yeah, V2. converted mid. Yeah, yeah. Okay, so 600 answer, 600 joules is answer. Next, ideal gas is heated isobarically and volume increases from this much. Initial temperature is given, final temperature. In terms of temperature में is given. He is asking what is the final temperature. Work done. You want to be 600. हाँ 600. देखेंगे उसका. So 150. Oh no, 600. 600. Yeah. Sure. 600. 600. Why? Because we know isobarically volume is proportional to temperature. चार सा use करने वाला है. Okay. Next. 2 moles of monatomic gas are heated isobarically through 100 Kelvin. Find the heat supplied. $500. R value 8.3 ले लो.
4,150. We'll see. So I got 2,490. 2 moles of monatomic gas is heated isobarically. We have to use. Oh wait. Oh my God. So one second. NR delta T, right? Sir, 1 second. Yeah, sir. 4150. My bad. Yeah, 4150 is also. Next. Because heat का पूछा ना, heat का right formula you can use NCP delta T. Instead of using CP by mistake, I found CV. Okay. Either you can use. The 1 mole of diatomic gas undergoes isobarically temperature is much, but it's change in internal energy. Internal energy does not depend on process, right? 300 R. So 2490. Yeah, 300 R. 1, 2, 4, 5. Why 300R? NCV delta T, right? CV find किया? Not only, sir, if you do the multi, you'll get 800 into No, he 300 into 8 multiplied. point. 8.3 into 300 you're telling, right? Yeah, that's 2490. Mari 1 to 4, 5, sir. Sir, I extended, sir. If you want, even you try once. 5 by 2 into 8.3 to 120, right? कितना? So I yeah, got 300. 300. 300 into 8.3 is okay, ठीक है. Right, maybe wrong. Okay. हाँ, समझ में आया? चलो. Next. 1 mole of ideal gas undergoes isobaric process with temperature this much. Find Q, W, and delta U. Ratio चाहिए. So, which gas is it, diatomic or monatomic? Monatomic ले लो. So, 5:2:3. देखेंगे. Yeah, sir. 5:2:3. 5:3. So man, this formula is using and solving RR can cancel. We are getting 5:3. Next. 3 moles of ideal gas are heated isobarically from this much. Find the work done. So, 600 R. देखेंगे. Sir, 4980. हाँ 4980. 600 R मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एग्जाम में. Okay. चलो. Next one is isochoric process. Second process is isochoric process. Not tell me. No, same way. Choric process means what is choric means what is constant? Volume is constant. In PV equal nRT में volume constant है तो nr constant. That means P is proportional to temperature. That means P by T is equal to constant. That means P1 by T1 is equal to P2 by T2. Right? Next, if you draw the graph of this isochoric, right? Pressure and volume. So volume is constant, right? ऐसा रहेगा. The graph is like this. Okay. So this is Boyle's law, right? What is the Boyle's law states? Tell me. Which At one is? constant volume. Yes. Yeah. Correct. Now here, if you draw the Won't P it be, versus so won't it be 1 second? So won't it be inversely proportional? कौन सा P is proportional to T आएगा. Why is it proportional here?
Here in this Oh, case, in this case, P is proportional to T. Okay. Now, if I draw the graph between pressure and temperature, कैसा रहेगा? ऐसा direct relation. ग्राफ है ना, इन डायरेक्ट रिलेशन आएगा. नाउ इन दिस में कांस्टेंट वॉल्यूम में CV कितना है? CV is in terms of degree of freedom में F/2R or R Oh, no, by this is Gay-Lussac's law. Boyle's law is pressure law or Yeah, Gay-Lussac's law is same. Okay. I told right to remember Bluetooth. दूसरा can't play can't play games virtually. games virtually. देखो Yeah, so Gay-Lussac's. Boyle's law temperature constant. Gay-Lussac's law is volume constant. Okay. Gay-Lussac's law is also called as pressure law. नेक्स्ट डेल्टा क्यू कितना होगा? QV कितना होगा? कांस्टेंट वॉल्यूम में N CV डेल्टा T एंड डेल्टा U विल बी N CV डेल्टा T. वर्क डन कितना होगा देन? वर्क डन विल बी सेपरेट करने से आपको 0 आएगा. So there is no work done in isochoric process. Work done is 0. Yeah, so done. Yeah. चलो. और ये वाला इंपॉर्टेंट है आपको. Next. करो. 2 moles of monatomic gas is heated isochorically through 150 Kelvin. Find the heat supplied. Four 450R. देखेंगे. So it'll be 450 only. नो भाई फार्मूला Q का फार्मूला है ना. हीट सप्लाइड फार्मूला क्या है? That's a 450 into 8.3. 2 into 3 by 2 into 8.3 into 150. हाँ यस. मल्टीप्लाई करके R मल्टीप्लाई कर लो एंड टेल द आंसर. पूरा बोलो. ओके. नेक्स्ट. हियर One चेंजिंग second. इंटरनेट. So can you go back one second? Can you go back to the previous slide? Before this. So isochoric one. Oh. I forgot to draw the other graph. Yeah, so done. 1 mole of diatomic gas is heated isochorically from this much to this much. Find the change in internal energy. Delta U is asking. So 4150. 4150. Yeah, so 450. Maybe calculation mistake क्या होगा देखो. 500 into 4150. Yeah, 4150. Next. Ideal gases is heated isochorically in temperature increase. हाँ 2. देखेंगे. Yeah, 2. Because डबल हुआ तो ये भी डबल होगा ना. Next. 1 mole of a gas absorbs this much joules of heat in an isochoric process. Find the change in internal energy. So 2500. Let's see. Because in isochoric में work done is 0. When work done is 0, heat is equal to Just internal energy. Yeah. Next.
So 100. 100. Wait, 1 second, 1 second. No, 1 second. So 750. Taking 750. Yeah, so 750. yes. Next, isothermal process. Very important. These two processes, last two processes are very important. Isothermal process में what is the constant? Temperature is constant. And from ideal gas में, if we use PV is equal to nRT, if temperature is constant, nR is constant, that means P is inverse proportional to volume. This one, right, boys? P is inverse proportional to volume at constant temperature. That means PV is equal constant. That means P1 V1 is equal to P2 V2 in isothermal process में. Since is inverse relation, the graph कैसा रहेगा? Inverse रहेगा ना? Pressure, volume ऐसा रहेगा. That. This is a temperature, certain temperature T1. Okay. अगर मैं increase करूँगा temperature, मतलब I'm keeping temperature constant but at higher temperature में. If I draw the pressure and volume, the graph will be shifted like this. ऐसा. T2, T3. So T1 is greater than. So T1 is greater than, T2 is greater than T3, or T3 greater than T3 greater than T2 greater than T1. ऐसे ग्राफ शिफ्ट होते जाएगा. As temperature increases, graph will shift towards the back side. ऐसा जाएगा. Okay. And slope कितना होगा? Tell me. What is the slope of this line? dP by dV is equal to minus, because if I draw one tangent greater than 90, right? So minus P by V. This is slope. Slope of isothermal process is minus P by V. Very important. So if I draw the graph, other graphs, So, but the slope of only PV graph, right? PV graph ka only. Okay. If volume temperature ka graph if I draw, the graph will be like this. Temperature is constant, right? And here delta U kitna hoga? At constant temperature mein N CV delta T is the formula, right? Delta T kitna hai? 0, right? So delta U is 0. Change in internal energy is 0. Now heat ka formula in this mein, tell me, what is the heat formula? Is equal to work. So we can't use NCV delta T, NCP nahi, because it is not a constant volume, constant pressure, right? So that's why which is equal to work done. So work done पहले calculate करेंगे. So work done कितना होगा? Integral, because pressure is not constant right here. Integral V1 to V2 PdV, right? This is the formula. Right? Now P के जगह में use ideal gas equation. एक copy to. Yeah. Now work done का use करो. Work done is equal to integral V1 to V2 P into dV, right? So P की जगह में PV is equal to nRT. So from this P is equal to nRT by V. So It's like an nRT ln V2 by V1. nRT by V dV. What will get? Nothing will get. nRT ln V2 by V1. No, wrong. nRT by V2 by V1 क्या है? nRT ln sir, log. हाँ. nRT constant से बाहर आएगा. 1 by V का integration is log. So log upper limit minus lower limit, that is nothing but log m minus log n is log m by n. So ln, ठीक है, log ln or log both are same only here. V2 by V1. This is the formula for work done. Okay. In terms of pressure में, in terms of pressure में कैसा आएगा? Inverse relation, right? So W is equal to nRT log base C P1 by P2.
बट डन एंड दिस इज इक्वल टू द आपको क्या है क्यू क्यू के साथ इक्वल है सो वर्क डन इज इक्वल टू क्यू इज ऑल क्यू बिकॉज फर्स्ट लॉ यूज किया तो डेल्टा यू जीरो है डेल्टा यू जीरो है तो क्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू Can you go back once? या Yeah, so done. ओके चलो फॉर्मूला बैठ करो आइसोथर्मल प्रोसेस में एनआरटी लॉग So isn't it negative? विच वन So NRT Isn't it minus ln NRT? V2 by V1. नो कुछ नेगेटिव नहीं है एनआरटी एलएन वी टू बाई वी वन एलएन और नेचुरल लॉग और लॉग टू द बेस इज सेम ओके अगर लॉग 10 में कन्वर्ट करने के लिए इन टर्म्स लॉग 10 में 2.303. 2.303 मल्टीप्लाई करना है बट जनरली ई में लर्न करेंगे ओके नाउ देखो इसमें आपको इंपॉर्टेंट थिंग है आपको क्या इंपॉर्टेंट थिंग है टेल मी इसमें आइसोथर्मल प्रोसेस में व्हाट इज इंपॉर्टेंट टेल मी Temperature is constant and U is 0. नहीं नहीं ऐसा नहीं है न्यूमेरिकल करने समय आपको क्या यूज होगा विल अंडरस्टैंड बट दिस प्रोसेस इज वेरी वेरी स्लो प्रोसेस वो भी लिखो दिस प्रोसेस इज वेरी स्लो प्रोसेस टू मेंटेन कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रोसेस शुड बी वेरी स्लो ओके एंड दूसरा इट शुड बी परफेक्टली कंडक्टिंग बाउंड्री conducting boundary should be there then only isothermal process can be achieved so they'll indirectly instead of saying isothermal they will mention slowly process बोल के बोलेगा very slow process means nothing but isothermal process only ये वाला okay and इसमें important numericals करने समय without knowing the log values how can you get the value tell me थोड़ा आपको सम मिनिमम बिलो 10 वाला आपको लर्न करना पड़ेगा बिलो 10 आता है लॉग वैल्यूज नेचुरल लॉग वैल्यूज Sir, I know Sir, I only only know. 2 and 3. Yeah, sir. I remember only 2, 3, 5. ओके बस उतना ही बिकॉज 7 मतलब Sir, not even बिलो 5. 2, 3. I हाँ forgot. हाँ No, 5. I remember. Wait. So 2 is 0.4. I think. देखो लिखो नेचुरल लॉग का 1 इज 0 एंड लॉग 2 का 0.7 अप्रोक्सीमेट वैल्यू नॉट परफेक्ट का नहीं आपको 0.7 लॉग 3 इज 1.1 log 4 is 1.4 log 5 is 1.6 log 10 is 2.303 and log 7 is 1.95 approximately so ये आ गए तो देन ओनली न्यूमेरिकल्स में आपको वैल्यू आ गए तो उधर रुक जाएगा ऑप्शंस में वैल्यू मिलेगा Yeah, sir. Done. ओके चलो एंड दूसरा सम मोर फॉर्मूला से लर्न करना पड़ेगा log a पोन n मालूम है ना n log a एंड log a b इज log a प्लस log b देखो वो एडवांटेज क्या है सपोज मान लो आपको 8 मालूम नहीं है log 8 को मालूम नहीं है ना आई कैन राइट एज log 2 क्यूब so a power n का formula will be n log a right so 3 log 2 and log 2 value no multiply किया तो you will get as 2.079 approximate value तो मैं ऐसा we can derive 6 का मालूम नहीं है but I can add as log 2 into log 3 log ab का formula is log a minus log b right so a log a plus log b multiply करके we can get so आपको minimum that values if you know you can derive the things okay चलो ये मालूम है ना हाँ ए भी इंपॉर्टेंट है ए पोर एक्स इज इक्वल टू ए मालूम है फॉर्मूला
ई पोर एक्स लॉग ए, ये किया किधर, ए पोर एक्स का वैल्यू Yeah. इज इक्वल टू ई पोर एक्स लॉग ए, वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आपको सर्टन टाइम्स में वो वैल्यू नहीं मिलेगा आपको नॉर्मली, लाइक दिस दिल टेल सपोज 1/2 होल पावर 0.5 ऐसा कुछ बोलेगा, देन हाउ टू कैलकुलेट दैट वन वी डोंट नो, बट ऑप्शंस में आपको वैल्यू मिलेगा, वो वैल्यू नहीं आए तो प्रॉब्लम हो जाएगा, दिस इज द प्रॉब्लम विद द आइसोथर्मल प्रोसेस में, आपको एग्जैक्टली लॉग वैल्यूज नहीं आए तो ऑप्शन नहीं मिलेगा, दिस इज द थिंग। सो ये वाला आने के लिए आपको ई पावर वैल्यूज आल्सो यू नो, ई पावर वैल्यूज यू नो, ई पावर वैल्यूज यू नो, ई पावर 1 ई पावर 2 ऐसा वैल्यूज मालूम है आपको, देखो लिखो So you have to remember these. ये वाला मिनिमम ये थोड़ा लर्न करो, so थोड़ा यूजफुल हो गया, अप्रोक्सीमेट आंसर वी कैन नो, ओके। सो ये एक्स का देखो ई पावर एक्स मतलब ई पावर 0.1 इज 1.0105 एंड ई पावर 0.2 इज 1.22, मतलब ये एडवांस में एक बार पूछा है, थोड़ा अंडरस्टैंड करो, लिखो, देखेंगे क्वेश्चन करने समय, वही आपको सपोज ऐसा दिया तो ऐसा ई पावर में कन्वर्ट करेगा, देन आंसर आने के बाद अप्रोक्सीमेटली इन बिटवीन ऑप्शंस यू कैन चेक विच वैल्यू इज राइट बोल के, डन, Yeah. चलो। सो आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन मालूम है ना, एनआरटी लॉग V2/V1 to the base C, and a very a slow process will be happening in the isothermal process में, तो करो, find the work done in this process in terms of volume में दिया ना, find the work done, So I got 3984. 3984 हाँ, Yeah. approximately 4,000, yeah, देखो V2/V1 log 5 right, log 5 का approximately Yeah. use Yeah. करके, Yeah. Yeah. next in terms of pressure में दिया है, from here to here it is lagging at 300 Kelvin, find the work done by 2 moles of gas, So 6972. अरे कर रहे हैं और राइट आंसर बोल रहे हैं, sure Sir, I'm just directly multiplying. Yeah, I'm not writing any form numbers. Sir. Yeah. हाँ यस करेक्ट, नीट करो फिर से, आपको रिवीजन के लिए यूजफुल होगा, does this much of work done as a process, find the heat absorbed, Won't be 0. heat is 0 by Yeah, because delta T is 0. delta T is 0 है तो what is The formula for, isothermal no. हाँ see Wait, Q heat, का yeah, formula heat is 0. हाँ heat on m डाउन Yeah, I think heat is 0. 0 ना, हाँ रीजन बोलो why it is 0 बोल के, So because see it's an isothermal process. isothermal process में temperature is constant, okay, Yeah. So this is delta Q delta का T, फॉर्मूला right? क्या है,
फॉर्मूला क्या है डेल्टा क्यू का? NCP delta T. नो, वही है कांस्टेंट प्रेशर है, वाई आर यूजिंग सीपी? Oh, okay. So 2500. हाँ, सेम है ना, Q इक्वल टू V, डेल्टा U इज 0, बट इसमें मल्टीप्लाई किया तो 2500 है. ओके, बिकॉज आइसोथर्मल प्रोसेस में Q इज ऑलवेज इक्वल टू W. Ideal gas this much has volume this much and pressure this much. Find the volume when the pressure becomes this much in isothermal process. So I got 16. देखेंगे. Yeah, so 16. Next, so the volume becomes 3 times of initial volume. Find the work done in terms of nRT. So NRT LN. NRT LN3. NRT LN. Yeah, So that's 1.1 NRT. yeah, no problem. Next one is adiabatic process. Adiabatic process. So adiabatic process में delta Q is how much? 0. There is no heat exchange. Okay, and for this में there is a relation between volume, pressure and volume का. Okay, वो क्या है relation? Tell me. PV power gamma is equal to constant. Gamma is adiabatic constant बोलते हैं. This is the first relationship. PV power gamma is equal to constant. And since heat is 0, so here कौन सा equation use करेगा? Generally PV power gamma use करना पड़ेगा. समझ में आ रहा है? Gamma is which one? Gamma is CP by CV. And convert now, I suppose मान लो I want in terms of temperature and volume. How to convert? Volume तो constant है, temperature and volume में चाहिए. So क्या आएगा? So TV per gamma minus 1. T V power gamma minus 1 is equal to constant. Okay, So but how suppose do I you get want that? How do you get that formula? ideal gas equation. PV is equal to nRT. So I want in terms of T and V, right? So P को eliminate करो. So from this P is equal to nRT by V. I substitute in this. P की जगह में nRT by V into V power gamma is equal to constant. Yeah, okay, got it. NR वाला constant है, a T V power gamma minus 1. ऊपर गया तो 1 minus है ना, ये वाला. I want in terms of P and T. P and T. मतलब P तो मालूम है, इसमें इसको एलिमिनेट करो इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर में. तो कितना आएगा? PT power 1 minus gamma. PT power no wrong. Oh no, P power gamma. No, 1 second. No, P power 1 minus gamma T gamma, something like that. Yes, P power 1 minus gamma into T power gamma is को constant. ये adiabatic problems में बहुत सारा काम आएगा ये equations. So what are the given equations? उसका accordingly you have to use this one. That means I can write like this, right? P1 V power gamma is equal to P2 V2 power gamma. ऐसा लिख सकते ना? And इसमें if I draw the graph of pressure and volume का, A भी inverse relation only, right? A भी देखो ये बेजे तो 1 by है ना, so inverse relation only ऐसा रहेगा. स्लोप थोड़ा ज्यादा रहेगा. ओके, एंड इसका स्लोप कैसे रहा, कितना मालूम है? स्लोप इज नथिंग बट dp by dv, राइट? इज कितना? माइनस गामा टाइम्स p by v. माइनस p by v इज नथिंग बट आइसोथर्मल प्रोसेस का स्लोप, राइट? ये माइनस गामा टाइम्स ऑफ आइसोथर्मल का स्लोप रहेगा. मतलब थोड़ा ज्यादा स्लोप रहेगा इन एडियाबैटिक प्रोसेस में. समझ में आ रहा है? स्लोप ज्यादा है. Yeah. सपोज मान लो इफ द गिवन लाइक दिस, प्रेशर एंड वॉल्यूम है. Pressure So and but volume. work done most will be in isobaric and then adiabatic, right? What?
The Work done which is process has the maximum amount of work done? That's isobaric, right? yeah. That will see graph में आएगा. So if you see here, ऐसा ऐसा. So first graph and second graph. Which one is isothermal? Which one is adiabatic? Tell me. First one's isothermal, second one's adiabatic. ये तो ज़्यादा स्लोप रहेगा. Second is adiabatic and this one is आपको isothermal. So मैं okay. Now tell me in this में what is delta U in this process में N CV delta T. NCV delta T. Okay. Now work done will calculate. You tell me delta Q is equal to delta U plus work done. ये तो जीरो है. So work done is equal to minus delta U. Minus delta U. So it'll be nRT by gamma minus 1. ओके. एनआरटी माइनस गामा माइनस वन ठीक है. बट इसमें डेल्टा यू का फॉर्मूला मालूम है ना? माइनस एन सी वी डेल्टा टी. Yeah. ओके. नाउ सी वी इन टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम में NFR R by by gamma एफ बाई minus 1. टू आर. एफ बाई टू आर राइट इंटू डेल्टा टी. This is an डेल्टा टी adiabatic only, right? हाँ This is an adiabatic only, right? एडियाबैटिक ओनली. ओके. आर इन टर्म्स ऑफ आर एंड गामा में आर बाई गामा माइनस वन टाइम्स डेल्टा टी. Right? And delta T is nothing but T2 minus T1, right? Minus. I'll send minus to the other side. What will become? Tell me. देखो. Minus NR T2 minus T1 times gamma minus 1. Now देखो ये माइनस को अंदर भेजूंगा. So वो क्या आएगा? Work done is equal to NR times T1 माइनस T2. वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें ये मिस्टेक हो जाएगा गामा माइनस वन. ये कंफ्यूज भी हो जाएगा. पीपल सोचेगा चेंज इन टेम्परेचर विल बी डेल T2 माइनस T1. ये माइनस के वजह से आपको फॉर्मूला ये लर्न करना पड़ेगा. NR T1 minus T2 by gamma minus 1 is the formula for adiabatic process for work done. So yeah, NR T1 minus T2 by gamma minus 1. Now कर सकते ग्राफ. now कर सकते क्वेश्चंस. और रिलेशन पे ऐड करो. That's done. Tell me तीन रिलेशन बोलो. So which one? Three relations. Adiabatic process में PV PV per for gamma is constant, TV per gamma minus 1 is constant, P per 1 minus gamma, T gamma is constant. ओके. नाउ इसमें ये लर्न कर लो. सपोज मान लो आई विल ड्रॉ द ऑल प्रोसेस का एक बार ड्रॉ करेंगे. पी वी राइट. इन आई एम टॉकिंग अबाउट एक्सपेंशन. इन एक्सपेंशन में टेल मी ऑल ग्राफ्स कैसा रहेगा. टेल नो आइसोबारिक प्रोसेस. सपोज इज द इनिशियल वॉल्यूम. is the initial volume V1, is the initial volume V2. In this process we are seeing. So it'll be Okay. horizontal straight line. Okay. Now tell me isochoric में. Vertical straight line. This is isobaric. This is isochoric. Okay. Isothermal It'll be a curve. and adiabatic will be like this, right? Yeah. So this is isothermal. Adiabatic. मतलब now tell me in expansion में which का work done? Area under PV graph gives the work done, right? So isobaric का ज़्यादा work done है. Okay. Now compression में I'm taking the process P1 V2. So it'll be reverse direction. Yes. Isobaric तो ऐसा. And isothermal will be like this. And
Isochoric will be, adiabatic will be like this. So adiabatic will be the highest. Yes. And isochoric will be like this, constant temperature. So इसमें adiabatic will be the work done is more. चलो, now questions करो इसका, हो जाएगा. Copy it. Yeah. Approximate answers you can tell. Ideal gas expands adiabatically from here to here. Initial pressure is P. Find the final pressure. Gamma value is 1.4. They told. Use calculators. कितना? एडियाबैटिक का फॉर्मूला मालूम है ना? P and V का रिलेशन यूज करो. So PV power gamma is equal constant, right? Gamma value is given. So it will be 2 power 1.4. देखें. 2 power हाँ. Yeah. देखो. Suppose मान लो. देखो ऐसा राइट. Yeah, sir, remembering that only. देखो ये इसको कैसे कैसे सॉल्व करेगा? Sir, I got, wait. Yeah, sir, I got that only. But This is like a power x, right? A yeah. power x को I told you e power x log a. Oh, So एक बार करो एक बार. E power x is 1.4 some will be minus. log 0.5 Oh, okay, yeah. or 2 power minus 1, right? So उधर गए तो minus 0.4 into log 2. So, but वो yeah, okay. वो मल्टीप्लाई करके e power some value आएगा. हाँ, e power minus है तो 1 by e, right? 1 by e क्या तो approximately you'll get this one. If you Okay. that value you have to know थोड़ा. समझ में आ रहा है? e power x का वैल्यू थोड़ा मालूम है तो देन आपको sometimes में मॉडल they'll give options में. आपको इधर आने के बाद कौन सा मैच हो रहा है समझ में नहीं आएगा. So थोड़ा e power values also very bad. आया क्या बोला? Yes, sir. क्या करो? Now temperature and volume terms में the given adiabatic expansion is saying final temperature is how much? So I got 300 into 1.4 whole power 0.4. Okay, try करो expansion करो थोड़ा. We'll see approximately answer कितना right or wrong है. I saw Sir, how do we do 4 power of 0.4? it only same. 1 second, sir. TV. minus 1. Approximate answer मतलब options का help लेना पड़ेगा थोड़ा मतलब generally. So what's e power 0.4? कितना? E power 0.4. So, हाँ, my वो answer is 300 by 4 into 4 power 0.4. हाँ मतलब उस टाइम में आपको ऑप्शंस के थ्रू थोड़ा मैच करना पड़ेगा.
ओके, ई पर 1 मालूम है ना? सो ई पर 1 का वैल्यू से कम रहने का, दैट वैल्यू. ओके, सो आंसर विल बी 180 केल्विन. Okay. सो मैं ई पावर 1 का वैल्यू मालूम है, स्टैंडर्ड वैल्यूज मालूम है, उससे आपको कम रहेगा रहने का ऑप्शंस में. सो दैट वैल्यू कैन चूज. ओके, नेक्स्ट. So he's asking work done in adiabatic process. Gamma value is given. Work done is asking. So if you're working negative, so should we take mod of it? Positive. Work is done by the gas, work obtained from the gas. So that one there is. But answer बोलो कितना आएगा value? Sir, I got 2075. Let me have So it. one second. Sir, yeah, 2075. Yeah, correct. So temperature drops from here. Pressure चाहिए. तो प्रेशर एंड टेम्परेचर का रिलेशनशिप यूज करके P2 by V1 करो. So sir, again 2 per 1.2 per 1.4. 2 per 1.4 again you can try for that value formula. 0.38. So कितना आंसर? Yeah. 2 per 1.4 is to 1. देखेंगे वो करना. Sir, I'm getting 2 per 1.4 whole root of 0.4. देखो और कैसे रहेगा, देखो ये कांस्टेंट है ना, मालूम है ना. सो T2/T1 इज इक्वल टू P2/P1 होल पावर गामा -1. ये गामा को मैं क्या करूंगा, ये उधर भेज रहा हूँ, ये वाला इधर भेजूंगा. सो क्या आएगा, गामा बाई गामा -1. सब्स्टिट्यूट आई विल गेट दिस वन, 0 0 कैंसिल. 1/2 होल पावर 3.5. Oh, sir, I forgot. I did one man. I forgot to 1 minus gamma. Yeah. So 1/2 whole power, this one means you can take again, you can take as a power x का formula use करके solve करो. ओके, ई पावर टर्म्स में आएगा ना, ई पावर एक्स लॉग ए, वो यूज करके थोड़ा सॉल्व किया था अप्रोक्सीमेटली. यू गेट एस 1:1:11. Gas does this much of work done. Find the change in internal energy. I'm asking. It will be the same. Same answer. Yeah, sir, 500, yeah. Yes. नेगेटिव आएगा ना, माइनस. Yeah. टेम्परेचर एंड प्रेशर टर्म्स में से.
So I got 1 by 8 whole power of 0.4 is equals to T2 by 300 whole power of 1.4. ये है ना ये वाला. Yeah. So ये कैंसिल करके एक बार करके अप्रोक्सीमेट ले सकते हैं. ओके, सो विल गेट दिस वन. Okay. तो वो तो पूरा ऑप्शंस में जाना पड़ेगा. सो लास्ट वन इज पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस. ये भी खत्म करेंगे. पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में क्या है? we have a relation PV power n is equal to constant. Okay, n is polytropic index. N is polytropic index. It is not PV equal constant. PV power n is constant. That is called polytropic process. Exam will mention polytropic process will give. And based on the n values, different process will be coming to picture. So n equal to 1, PV equal constant. What is that process called? Isothermal. Based on the n values, the process will define. Okay, n equal 0 means isobaric, n equal to 1 means isothermal, n equal to gamma means adiabatic, n equal to infinity means isochoric, and n equal to n means polytropic. This is the process. So now PV पर gamma जैसे है ना, so उसका formulas will be similar to that of adiabatic process का formula. Okay, कब बेटा? Yeah. So इसका formulas क्या रहेगा? वही formulas है. Adiabatic formula जैसे रहेगा. देखो, PV power n equal to constant, TV power n minus 1 is equal to constant, T power n, P power 1 minus n equal to constant. गामा के जगह में n रहेगा. And work done का formula is P1 V1 minus P2 P2 by n minus 1. Because nRT, right? nRT means PV, right? T1 minus T2, right? समझ में आया? nR delta T, right? Delta T is nothing but T1 minus T2. So when you multiply nR T1 minus nR T2, P1 V1 equal to P2 V2 by using ideal gas equation. Problem? So it's the same as adiabatic now. Adiabatic gases आएगा polytropic process. Yeah, so done. Next. करो. N value is given. Volume doubles the pressure P1. Find pressure P2. So I got P2 as T1 into 1 by 2 whole power of 1.5. Okay, and options case true. We can check this one. कैसा है बोल के. So polytropic process is almost similar to that of adiabatic process. So वही formulas रहेगा जो भी temperature, volume, pressure, temperature उसी में formulas लगा के same method में करने का, but n value will be that much. So by this thermodynamics का डना and second law of thermodynamics का statement learn करना पड़ेगा. Statement there is no numerical in the second law. Statement learn करना पड़ेगा. Statement आते हैं ना आपको? Entropy, right? Entropy one. No, second law में आपको clauses का दो statement रहेगा. वो learn किया था खत्म second law का. Okay. So the 100% efficiency is not possible. नॉट पॉसिबल बोल के वो वाला. एंड दूसरा सेकंड थिंग क्या है आपको, लाइक रेफ्रिजरेटर का डायरेक्टली नॉर्मली हीट विल फ्लो फ्रॉम हीट टू कोल्ड, राइट?
but reverse process is possible by itself. Like cold say heat ban sakte hai with itself by itself means no. Answer is no. You have to do some work done. That is only second statement का. This is only second law. So आपको statement पढ़ो, chapter done successfully. समझ में आ रहा है? Yeah.